हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो आज हम लोग सिमिलर मैट्रिसेस और कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे थ्योरम्स होती हैं, उनको देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस। तो देखते हैं कि डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलर मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं कि सिमिलर मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं। that is your similar matrices. Similar matrices. So two matrices A and B, two matrices A and B are said to be similar, are said to be similar said to be similar similar if there exists a non-singular matrix C such that this is A is equals to C inverse B of C, or you can say that this B is just equal to uh, CA C inverse. Okay, so two matrices A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix C such that we can retain a matrix A, the product of the inverse of this non-singular matrix, and B. Okay, so it means A is equals to C inverse B of C. अगर इस तरीके से हमको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है such that this condition holds, so in that case A and B called the similar matrices. They are similar. Okay, so this is the definition of similar matrices. तो similar matrices की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि similar matrices have the same determinant, रैंक एंड ट्रेस। ठीक है, हम जब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की बात करते थे तो वहां पर केवल रैंक इक्वल होती थी, हम ट्रेस और डिटरमिनेंट के बारे में कुछ नहीं कह पाते थे। बट इफ द मैट्रिसेस आर सिमिलर देन देयर डिटरमिनेंट, ट्रेस एंड रैंक विल बी इक्वल। लिख लीजिए, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम डिटरमिनेंट, है सेम डिटरमिनेंट, trace and rank. Rank, rank. Similar matrices have same determinant, trace and rank. If two matrices are similar, if two matrices are similar, then they also equivalent. Two matrices are similar, then they are equivalent. Also, है ना, equivalent है। Number third, that is if two matrices
two matrices are equivalent, then they need not be similar. अगर इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं वो सिमिलर हो. क्लियर. तो दिस इज योर अबाउट द सिमिलर मैट्रिसेस. अब हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस क्या होते हैं. तो उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस की बात करेंगे. कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस, अगर एक रो ऑपरेशन इज फॉलोड बाय ए कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन कहते हैं. तो ऑपरेशन, अ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is an operation is an operation in which every row operation is followed by the corresponding column operation. Corresponding column operation. Okay, so a congruent operation on a square matrix is an operation in which every row operation is followed by the corresponding column operation, है ना. तो एक हमने रो ऑपरेशन लगाया, फिर उसी के साथ में जो भी हमने रो ऑपरेशन लगाया वही ऑपरेशन कॉलम पे भी हमने अप्लाई करा, तो ये टुगेदर इट्स कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन. ओके, so what are the congruent matrices? Let us see. So congruent matrices two matrices A and B two matrices A and B are said to be congruent are said to be congruent are said to be congruent if there exists a non-singular matrix P such that this is A is just equal to P dash B of P, है ना. इट मीन दैट हमारे पास जब सिमिलर मैट्रिसेस की हम बात करते थे तो एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई होता था
यहाँ पर ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स itself is multiplied with B gives A. In that case, A and B will call congruent matrices. So two matrices A and B are said to be congruent if there exists a non-singular matrix P such that A is equals to P dash B of P. So the transpose of P is multiplied with P and post multiplication by the matrix itself. तो अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें कि कैसे हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस को, symbolically, that is we can say this is A is congruent to B. Clear? So इसको दूसरे वर्ड्स में हमने अभी कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन डिफाइन करा कि अगर हमारे पास हम कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या होता है कि किसी एक रो ऑपरेशन को हमने लगाया, वही रो ऑपरेशन जो हमने रो के अंदर ऑपरेशन लगाया वही कॉलम ऑपरेशन भी हमें यूज करता है, तो टुगेदर इट्स कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन. तो इफ वी आर जस्ट शोइंग, इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और वी कैन सी लाइक दिस कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be congruent, if they can be obtained, from each other, from each other by applying congruent operations. Okay, so two matrices A and B are said to be congruent if they can be obtained from each other by applying the congruent operation. It means one row operation is followed by the column operation. Okay, so let us राइट सम रिजल्ट्स. हमने 3 रिजल्ट सिमिलर मैट्रिसेस के ऊपर लिखे थे कि हमारे पास जो सिमिलर मैट्रिसेस हैं उनके अंदर उनका डिटर्मिनेंट सेम होता है, उनका ट्रेस सेम होता है और उसकी रैंक सेम होती है. और इफ टू मैट्रिसेस आर सिमिलर तो दे आर इक्विवेलेंट एज वेल. इफ टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट दे नीड नॉट बी सिमिलर. अगर इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं सिमिलर हो. इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस के ऊपर रिजल्ट्स हम लिखते हैं कुछ, तो एक उसी रिजल्ट्स में फॉलो करते तो एक रिजल्ट लिखते हैं. 3 तो लिख ही चुके, 4th नंबर रिजल्ट लिखते हैं. कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस have matrices have same rank but need not have same determinant and trace. So congruent matrices have same rank but need not have the same determinant and trace if two matrices are congruent matrices congruent, then they are equivalent also.
So if the two matrices are congruent, then they are equivalent also. Or congruent matrices have the same rank but need not have the same determinant and trace. Congruent matrices का rank तो equal होता है but उनका determinant या trace जरूरी नहीं, ठीक है। तो if the two matrices equivalent भी होते हैं congruent matrices, ठीक है। Next, if the two matrices are equivalent, then they need not be congruent. अगर equivalent है तो जरूरी नहीं वो congruent हो। If the two matrices are equivalent, then they need not be congruent. Every matrix congruent to a symmetric matrix is symmetric matrix, है ना? Every matrix congruent to a symmetric matrix, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ सिमेट्रिक रही होगी। इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Okay, so every matrix congruent to a symmetric matrix is a symmetric matrix. If the two matrices are equivalent, then they need not to be congruent. It is ध्यान रखिएगा। Next, number 8 is what? अच्छा, इसको अगर प्रूफ देखना है, मान लो तुमको, अगर आपको ये प्रूफ करना है, सपोज दैट कि हमारे पास, कैसे हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अगर, तो हमने एक बी, लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ इट। अगर इसको लिखना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, क्योंकि ए को हम उसके ट्रांसपोज बी, ए टू पी डैश बी इंटू पी लिख सकते हैं, और फिर उसका हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ दिस ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यू कैन जस्ट से लेट अ मैट्रिक्स, लेट ए a matrix be congruent to a symmetric matrix A, then there exists a non-singular matrix P such that this is P is equals to P dash A of P, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, सपोज दैट हमने P का, हमने कहा कि P जो है कॉन्ग्रुएंट है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की, मतलब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम अब इसका जो है ट्रांसपोज लेके चलते हैं हम लोग, तो यू ने दैट दिस इज P डैश A ऑफ P का होल ट्रांसपोज, तो ये ओपन हो जाता है, दिस इज योर पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। तो इट विल बी, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ट्रांसपोज खुलता है, तो इट विल बी इक्वल टू पी ट्रांसपोज, और ए तुम्हारे पास ए का ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है, और ये हमारे पास पी हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बी अगेन, यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, बिकॉज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, बी इज आल्सो सिमेट्रिक, दैट मींस दैट अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है तो वो इटसेल्फ सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, दैट इज योर एवरी मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स
हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्ग्रुएंट है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रही होगी। एवरी मैट्रिक्स, every matrix congruent to every matrix congruent to a skew symmetric matrix is skew symmetric. Every matrix congruent to a skew symmetric matrix is skew symmetric. This is true. Same you can prove in the similar way. तो हमने ऊपर किया था तो हमने मान लिया let a matrix matrix B be congruent to a skew symmetric matrix matrix A. Clear? Then there exists a non-singular matrix P such that this is P is equals to P dash A of P। ये तो होता है। तो अब इसका हमें देखना है कि B डैश क्या निकलता है। B डैश implies this is P dash A of P का होल डैश, एंड जो हमारा ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो इट मींस दिस इज P डैश A डैश इनटू P डैश का डैश। तो P डैश तो P डैश ही हो जाएगा, और A डैश को हम माइनस ऑफ A लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंस दिस A इज स्क्यू सिमेट्रिक, so it means that it will be negative times of P dash of A of P, and that is equals to minus times of P, you can say like। तो इसका मतलब है जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं B का तो माइनस ऑफ P बना जा रहा है, इट मींस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो hence this B is also skew symmetric। It skew symmetric। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। A non-singular symmetric matrix is congruent to its inverse। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स इनवर्स, वो अपने इनवर्स के कॉन्ग्रुएंट होती है। तो a non-singular symmetric matrix is congruent to its inverse। A non-singular symmetric matrix is congruent to its inverse। प्रूफ की बात करते हैं तो लेट A be a non-singular symmetric matrix एंड क्लियरली अगर नॉन सिंगुलर है तो P इज जस्ट
हमने लेट पी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए इनवर्स, सपोज दैट, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा। तो हमने पी जस्ट कुछ नहीं लिया, हमने वही ए इनवर्स ही ले लिया। तो अब जरा हम निकालते हैं पी डैश ए ऑफ पी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इंटू पी, एंड यू कैन से दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस माइनस वन, दिस इज ए इंटू पी। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यू नो दैट कि ए डैश क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश सिंपली ए हो जाएगा। तो दिस इज योर ए इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ व्हाट, ए इनवर्स ऑफ ए इंटू पी। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो इट मीन्स यू गेट पी। और पी तुम्हारे पास क्या था, ए इनवर्स ही था, जो हमने मैट्रिक्स लिया है पी इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो हम देख रहे हैं कि पी डैश ए ऑफ पी इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई एंड दैट इज नॉन सिंगुलर ऑब्वियसली, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्टेंस हम तभी बात कर सकते हैं जब नॉन सिंगुलर हो। तो एक नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो वो मैट्रिक्स खुद के क्या होती है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट टू इट्स इनवर्स, है ना। इनवर्स जिसका है वो ए के कॉन्ग्रुएंट होता है, ये उसके इनवर्स के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। तो दिस इज रिजल्ट नंबर 9। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक पढ़ते हैं, दैट इज रिजल्ट नंबर 10। क्या है, अ मैट्रिक्स ए, अ मैट्रिक्स ऑफ पॉजिटिव रैंक, पॉजिटिव रैंक मतलब जीरो रैंक नहीं, मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जीरो मैट्रिक्स। A matrix of positive rank is congruent, it's congruent to a diagonal matrix, diagonal matrix if and only if it is symmetric. So if the matrix is of the positive rank, means positive rank we are talking about a non-zero matrix, because zero matrix की rank zero होती है, ठीक है। तो if नॉन जीरो मैट्रिक्स इज देयर, तो a matrix of the positive rank is congruent to a diagonal matrix, or definitely it will be congruent to a diagonal matrix if and only if it is symmetric। अगर वो symmetric है तो वो डायगोनल के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर वो डायगोनल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमेट्रिक ही रही होगी। तो दिस इज द रिजल्ट, 10th रिजल्ट, दैट इज सेइंग कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही वो डायगोनल के कॉन्ग्रुएंट होती है, और अगर हमारे पास डायगोनल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमेट्रिक होती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर था चीजें। डेफिनीशन, सिमिलर मैट्रिसेस के लिए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे सच दैट उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करके वो मैट्रिक्स हमारे पास प्रीवियस मैट्रिक्स मिल रही हो, और कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास ट्रांसपोज की हम बात करते हैं। बट इन द बोथ केसेस द मैट्रिसेस शुड बी नॉन सिंगुलर। ओके, so what is the definition of the similar matrices? True matrices A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix C such that this A is equals to C inverse B into C. And what is the definition of the congruent matrices? Two matrices A and B are said to be congruent matrices if there exists a non-singular matrix P such that A is equals to P dash B into P. यहाँ पर ट्रांसपोज की बात होती है, वहां पर इनवर्स की बात होती है, बट इन बोथ द केसेस matrices are non-singular. Okay, so we have learned about the definition of a similar and congruent matrices, और अगर हम कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस अप्लाई करके हम कोई मैट्रिक्स पा रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस कहलाते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाती थी, हम कुछ रोज या कॉलम्स ऑपरेशंस अप्लाई करते थे,
बट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या होते हैं कि हमारे पास कोई रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, फॉलोड बाई अ कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो दीज आर रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स एंड देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।